Thomas Gray, Elegy written in a country churchyard. So this poem, Elegy written in a country churchyard, was written by Thomas Gray, and this is the first poem of paper 1, poetry and drama. Alright. Elegy written in a country churchyard. So basically, elegy here means a song or a poem which expresses sorrow, grief for the person who has already died. But this elegy does not focuses on the death of any particular person. Okay, here this elegy does not focus on death of any particular person, but as a community. Here, the poet is talking about the whole community. All right, and churchyard. Churchyard here means the graveyard which is located around the church. जो चर्च के आसपास जो ग्रेवयार्ड होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. So basically I've provided you the summary of this poem so that you have an idea about what this poem consists of. Here the speaker is hanging out in a country churchyard just after the sun goes down. It was dark and a bit spooky. Here the word spooky means very ghostly or बहुत ही डरावना. So basically here the speaker was hanging out in a country churchyard and it was evening time. So he was very alone and it was a graveyard. So it was very scary. He looked at the dimly lit gravestones, but none of the grave markers are all the impress. जो भी gravestones होते हैं, the poet here looks over those gravestones, but none of them were very impressive. कोई भी gravestone इतना impressive नहीं था. बहुत ही common gravestones थे. Most of the people buried here are poor folks from the village. So their gravestones are just simple, roughly carved stones. So उस ग्रेवयार्ड में, उस चर्चयार्ड में जो भी ग्रेवस्टोन्स थे वो सारे पुअर लोगों के थे. दैट इज़ बेसिकली द फार्मर्स ऑफ द विलेज अराउंड देयर. सो देयर ग्रेव स्टार्स वेर वेरी सिंपल एंड वेरी roughly carved stones, just common stones were there. Nothing special was there about those gravestones. The speaker starts to imagine the kind of life these dead guys probably led and tell it really doesn't matter what kind of tomb you have when you are dead anyways. So here the speaker starts to imagine what kind of life these poor people, these farmers must have led, and he also focuses on the words that once you are dead, it really doesn't matter what kind of tombstone you have. Even though you are rich, even though you are poor, if you are dead, you won't come out to see what type of tombstone you have, right? So here the poet was focuses on the fact that आप एक बार मर गए तो आपके पास कैसा भी tombstone हो, it really doesn't matter. He tries to remind that we all are going to die someday, but that gets the speaker thinking about his own inevitable death, and he gets a little freaked out. यहाँ पे the poet is trying to remind us that एक दिन हम सब मरेंगे. One day we all shall die. But then the speaker also thinks about कि inevitable here means unavoidable, something which is unavoidable, and death is something which is unavoidable. We cannot avoid death. सबको एक दिन मरना है. So here the poet starts thinking about his own death, that one day he will die, and he gets very freaked out. That means he gets very scared that one day even I would die in the same manner. He imagined that someday in the future some random guy might pass through this same graveyard just as he was doing today, and the guy might see the speaker's tombstone and ask a local villager about it. So वो सोचता है कि एक दिन मेरी तरह कोई और इंसान आएगा यहाँ पे और ऐसे ही घूम रहा होगा और मेरी टोम पे आके किसी लोकल विलेजर से वो पूछेगा कि हु वॉज ही अबाउट, मतलब मेरे बारे में पूछेगा वो, और वो लोकल विलेजर मेरी टोम स्टोन की तरफ पॉइंट आउट करके बताएगा कि just read the epitaph written on the tombstone. Epitaph are basically the inscriptions written over the tombstone. So here this, like in this picture, I have fought a good fight. These are the epitaphs. Alright.
So in the end, the poet realizes that he was writing his epitaph in the poem. इस पोएम के एंड में तो पोएट रियलाइज़ करता है कि वो इस पोएम में अपना ही एपिटाफ लिख रहा है, दैट व्हाट पीपल शुड रिमेंबर अबाउट मी, व्हाट पीपल शुड रीड अबाउट मी, व्हाट दे शुड रिमेंबर मी एज. सो बेसिकली इस पोएम में द स्पीकर ही वॉज हैंगिंग आउट इन अ चर्च यार्ड जस्ट आफ्टर द सन गोज डाउन. मतलब इवनिंग का टाइम था, स्पीकर चर्च यार्ड में ऐसे हैंग आउट कर रहा था. एंड क्योंकि वो ग्रेवयार्ड था तो बहुत ही डरावना था, शाम का टाइम था और वो सारे ग्रेव स्टोन्स को देख रहा था. तो जो भी ग्रेव स्टोन्स उसे दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही कॉमन थे, दे वर नॉट इम्प्रेसिव, कुछ भी खास नहीं था. तो पता चल रहा था कि ये टोम स्टोन्स गरीब लोगों के थे, जो विलेजर्स थे आसपास के उनके थे, और जो फार्मर्स थे आसपास के उन्हीं के टोम स्टोन्स थे. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल बरीड देयर वर बेसिकली द विलेजर्स. सो उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, सारे बहुत ही सिंपल टोम स्टोन्स थे. तो द स्पीकर यहाँ पे सबको रिमाइंड कराता है कि देख, एक दिन हमें भी ऐसे ही मरना है, एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका टोम स्टोन कैसा है, बिकॉज वन डे यू विल डाई, एंड वंस यू डाई यू विल नॉट कम बैक टू सी कि आपका टोम स्टोन कैसा है, राइट? तो आप तो मर गए हो, आपका टोम स्टोन कैसा भी हो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है. और फिर बाद में स्पीकर इमेजिन करने लगता है दैट एक दिन वो खुद भी मर जाएगा इसी तरह, और जिस तरह से वो आज घूम रहा है ऐसे, उसी तरह कोई और इंसान आएगा और वो भी इसी तरह घूम रहा होगा और उसके टोम की तरफ इशारा करके किसी गांव वाले से पूछेगा कि ये कौन था, और वो गांव वाला इस टोम स्टोन की एपिटाफ, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं उसकी तरफ इशारा करके बताएगा कि आप खुद ही पढ़ लो इन सबको. सो बेसिकली ये पूरे पोएम में जो राइटर है, जो पोएट है, वो सिर्फ अपनी एपिटाफ लिख रहा है. ऑलराइट, आई होप you like this explanation. It will be very much helpful to you. Subscribe to this channel. Thank you.